talking about the next reform step. The power distribution companies in union territories shall be privatized. And that is likely to be also, it will be in line with the tariff policy which is soon to be announced. The tariff policy reform will of course talk about consumer rights. The inefficiencies of DISCOMs will not become a burden on consumers. DISCOMs will ensure adequate power. The standard of service that they provide will improve, and they will promote industry better by providing open access. Sustainability is an issue with power sector. We want to be sure that timely payments to the GenCos happen. You are aware that 90,000 crores have been given this time because DISCOMs were not able to pay or service their dues to the GenCos. Such disruptions or ups and downs should be avoided, and DBT also for subsidy receiving beneficiaries will be given directly, and smart prepaid meters will be set up, about which I had mentioned in the budget also. So tariff policy coming into place will also see one more major step, in that in the union territories we shall make sure that the DISCOMs are privatized. Suboptimal performance of power distribution and supply can never be in favor of the customer. So that is as regards power sector reforms. विद्युत के क्षेत्र में कुछ बदलाव किए जाएंगे, जहां पर सबसे पहले तो उपभोक्ताओं को उनके अधिकार, पर्याप्त बिजली मिलेगी और अप्रभावी बिजली कंपनियों का जो नुकसान है वो हमारे उपभोक्ताओं को नहीं झेलना पड़ेगा। डिस्कॉम्स को पर्याप्त बिजली उपभोक्ता को उपलब्ध करवानी पड़ेगी। लोड शेडिंग करने वाले को पेनलाइज किया जाएगा। दूसरा, इंडस्ट्री को बल मिलेगा, उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इससे क्रॉस सब्सिडी में कमी आएगी, विद्युत उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और जो विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं उनमें भी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और इनको चयनित भी उसी आधार पर किया जाएगा ताकि ये अच्छी सुविधाएं और सर्विसेज दे सकें। बिजली क्षेत्र में स्थिरता आएगी, इसमें कोई रेगुलेटरी एसेट्स नहीं होंगे और टाइमली पेमेंट जो है, समय पर जो पेमेंट है, जो पावर यानी कि बिजली का उत्पादन करने वाली कंपनियां उनको होंगी। डीबीटी का लाभ हमने बहुत सारी योजनाओं में देखा है कि किस तरह से माननीय मोदी जी की सरकार ने बहुत सारी योजनाओं को अब डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र के रूप से सीधा उपभोक्ता के खाते में पहुंचाने का काम किया, जिसमें उपभोक्ताओं को बहुत लाभ मिला। तो यहाँ पर भी सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से और स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लगाने का काम किया जाएगा ताकि किसी के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो सके और उसका भी लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ जो वितरण है बिजली का, वो यूनियन टेरिटरीज में उसको प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, निजीकरण करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इस पे जो सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इनकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की आ रही है और जो सप्लाई में भी कमी रहती है उसमें भी सुधार होगा और इसमें जो पावर डिपार्टमेंट और यूटिलिटीज़ हैं, यूटीज़ में, इनका निजीकरण किया जाएगा। इससे बेहतर सर्विसेज को बल मिलेगा, जैसा मैंने अभी आपको कहा। और यही नहीं, हमारी पावर डिस्ट्रीब्यूशन में भी एफिशिएंसी और आएगी और एक मॉडल के रूप में हम इसको देश भर के लिए खड़ा करके देंगे। सबसे पहले इनको यूनियन टेरिटरीज में खड़ा किया जाएगा और मुझे पूर्ण विश्वास है बाकी राज्य इन मॉडल्स को देखकर अपने अपने राज्यों में सुधार करने के लिए भी भविष्य में आकर्षित होंगे। The next is on social infra projects. For creation of social infrastructure projects, which are like hospitals, because India needs a ramp up on social infrastructure, government has made a provision for 8,100 crores
that will be the total outlay, which will be going in the form of Viability Gap Funding. So, in general, for most projects which are supported by government or states or the statutory bodies, 20% is what is given as Viability Gap Funding. But in this case of social infrastructure, government has decided to give 30% viability gap funding. So the quantum is increased from 20 to 30%. Through this, we expect that the urgent requirement for social infrastructure all over the country is not just going to be developed by government, but also private enterprises will come in because of this viability gap funding which we want to provide, and that is an increased viability gap funding. सामाजिक बुनियादी ढांचे में निजी क्षेत्र के इन्वेस्टमेंट को बल देने के लिए कुछ बदलाव उसमें किए गए वाइबिलिटी गैप फंडिंग में। और आपने देखा होगा कोविड-19 के समय भी कि स्कूल, अस्पताल, ऐसे हमारे जो क्षेत्र हैं जिनका बुनियादी ढांचे में और सुधार चाहिए, उसके लिए बल मिले। इसके लिए थोड़ा बदलाव किया गया है कि 30% केंद्र और 30% जो है हमारा राज्य सरकारें उसमें वाइबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में देंगी। इससे इस क्षेत्र को बल मिलेगा, लेकिन बाकी सेक्टर्स में 20% ही रहेगा। और इसमें कुल मिलाकर सामाजिक बुनियादी ढांचे के इस सेक्टर के वाइबिलिटी गैप फंडिंग के लिए लगभग 8100 करोड़ रुपए का आउटले किया गया है, और इन प्रोजेक्ट को राज्य और केंद्र की सरकारें प्रपोज करेंगी। The last two reform steps that I want to announce relate to space and space. The next one relates to atomic energy. First, in space, you know that India has had the benefit of an extraordinary institution such as the ISRO. ISRO has brought the nation a lot of laurels. However, today, private sector is also doing a lot of work in the space arena. A lot of individuals and startups have spent a lot of time developing space-related technologies. Unfortunately, because of the Indian regulations, they are even unable to use ISRO's available facilities for even testing their products. So what we want to do now, in order to provide level playing field for private companies, satellite launches and space-based services, we will make a provision for them to benefit from the assets which are available with the ISRO, and for India to benefit from it. We'll also provide predictable policy and regulatory environment for private players. We want them to be co-travelers with us, and therefore private sector is being encouraged. And also for future projects for planetary explorations and outer space travel, it will also be open for private sector. So in short, private sector is being given a good access to this space area where both government and private sector can work for a better Atmanirbhar Bharat. Another important aspect is there's a lot of geospatial data in India for Indians, particularly like startups which are looking at doing a lot of irrigation work, drought-prone area development work, groundwater work. They don't most often get the data within India. They go getting it from abroad, data about India, paying through their nose for some good work that they do for India itself. So a liberal geospatial data policy is something which we like to work, and we want to provide remote sensing data to tech entrepreneurs, but of course with a lot of sense of caution, because this is a very sensitive area. We want to also give the benefit and the advantage to the Indian startups who are also doing pioneering work. अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने बहुत अच्छा काम पिछले कुछ वर्षों में किया है। अब इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र भी
किस तरह से सहभागी हो, कैसे वो भागीदार बने और उपलब्धियों भरा आने वाला समय हो। इसके लिए अंतरिक्ष क्षेत्र की गतिविधियों में प्रतिपादक वृद्धि लाने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने का अवसर दिया जाएगा, ताकि प्राइवेट कंपनीज को भी बराबरी का एक तरह से अधिकार, जैसे लॉन्च करने की बात हो या सैटेलाइट्स की बात हो या अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ी हुई सेवाएं देने की बात हो, चाहे कम्युनिकेशन सैटेलाइट से बाकी हो, अनुमानित नीति लाकर हम अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बड़ा सुधार लाएंगे। और यही नहीं, निजी क्षेत्र की कंपनियों को इसरो की सुविधाएं या जो एसेट्स हैं उनको इस्तेमाल का प्रावधान करेंगे, ताकि वे अपनी क्षमता बढ़ा सकें और उपलब्धियों भरा हमारा आने वाला समय अंतरिक्ष के क्षेत्र से जुड़ी हुई, चाहे वो सेवाएं हो या खोज हो, उससे जुड़ने के लिए हो। भविष्य में चाहे वो ग्रहों की खोज की बात हो या बाहरी अंतरिक्ष यात्रा जैसे प्रोजेक्ट्स हो, इनमें भी निजी क्षेत्र आगे बढ़कर आए, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। उदार जियोपॉलिटिकल डाटा पॉलिसी हम लेकर आएंगे रिमोट सेंसिंग डेटा के लिए, ताकि टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स, विशेष तौर पर स्टार्टअप्स जो इस पर काम करते हैं, उनको विदेशी कंपनियों पर निर्भर ना रहना पड़े, वो इस दिशा में बड़े कदम उठा सकें। इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे और पॉलिसीज पर लाई जाएंगी। The last step for today under the set of reforms that we are announcing is related to atomic energy related reforms. There shall be a research reactor in PPP model which will be established only for the production of medical isotopes. Now, medical isotopes are increasingly used in cancer treatment. In fact, India has